Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, plants, forms and functions. When you go for a nature walk, observe the plants in the area. Are they of the same kind? Do all of them flowers? You find that all are not of the same kind. Some are big, some are tall, some have big leaves, some have small leaves, some have blue flowers, some have red flowers, and there may be some that have none. You can also observe the difference in their stem, roots, leaves, branching patterns and so on. जब भी कभी आप अपने आसपास के प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या वो आपको सभी सेम तरह के लगते हैं? क्या उनमें सेम तरह के फ्लावर्स होते हैं या सब में फ्लावर्स होते हैं? हाँ, लेकिन आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सब सेम तरह के नहीं होते. ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ प्लांट. The study of the external structure of plants is called morphology. Okay, plants के external structure की जो study होती है that is known as morphology. A plant consists of two parts, an underground part called the root system and an aerial part called shoot system, as shown in the given figure. See, this is the shoot system and this is root system. Okay, number one, the root system. The root is the underground non-green part of the plant. The root and its branches make up the root system of a plant. It mainly grows from the radicle of the embryo of a seed. It grows in the soil away from sunlight. It doesn't possess nodes or internodes. रूट आपका अंडरग्राउंड और नॉन ग्रीन पार्ट होता है. ओके, और ये मेनली आपका ग्रो कहाँ से करता है? जो सीड का एम्ब्रियो होता है उसके रेडिकल से. ओके, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते. पार्ट्स ऑफ ए रूट. When a dicot seed germinates, a thin thread-like structure called a radicle gives rise to a long, deep-seated root. It becomes thick and large. This is called the primary root or taproot. The primary root gets divided into branches which are known as secondary roots. The branches of secondary roots are called tertiary roots. The tip of each root is covered by a root cap for protection. Every root has a cluster of very fine thread-like root hairs for absorbing water and mineral salts from soil. Types of root system. There are two types of root system. Number one, a taproot system. Number two, a fibrous root system. Number one, taproot system. Tap roots are true roots. A taproot consists of a single main primary root with lateral branching arising from it. The primary root is longer than its branches and develops vertically downward into the soil. It is found in most of the dicot plants like gram, pea, mango, castor and beans. टैप रूट होती है आपकी ट्रू रूट. इसमें एक सिंगल आपकी रूट होती है प्राइमरी रूट और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें से अराइज होती है. प्राइमरी रूट जो होगी आपकी लंबी होगी और उसके मतलब ब्रांचेस के कंपैरेटिवली, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है सॉइल में. ओके, ज्यादातर ये डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है. ओके, Number two, fibrous root system. The fibrous root generally develop in cluster of slender roots which arise from the base of the stem. These roots spread from a common point and are about the same size. They spread out in the soil and give firm support to the plant. They are found in most of the monocot plants like rice, maize, wheat, barley and grasses. अब फाइब्रस रूट में क्या होता है कि क्लस्टर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं स्लेंडर रूट्स के, जो कि स्टेम के बेस से आपके निकलते हैं और ये ऑलमोस्ट सभी सेम साइज के होते हैं. ये स्प्रेड हो जाते हैं सॉइल में और ये फॉर्मली सपोर्ट करते हैं प्लांट को. ठीक है, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं मोनोकोट प्लांट्स में लाइक राइस, मेज, वीट, बार्ली एंड ग्रासेस. ओके, अब एक मोनोकोट आपका आया है और एक है आपका डाइकोट. डाइकोट मीन्स जैसे अगर आप चने का अगर आप सीड लेंगे, राइट, उसको सोक कीजिए सुबह, जब वो स्वेलन अप हो जाएगा तो आप उसको ब्रेक कीजिए, वो टू पार्ट्स में आपको नजर आएगा. तो दैट इज डाइकोट. एंड मोनोकोट जैसे राइस है, राइस को आप ब्रेक करेंगे तो वो टू पार्ट्स में आपको नजर नहीं आएगा. ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. रूट्स may get modified in shape, size, structure and functions to adapt their habitat. Number one, storage roots. The tap roots of plants such as turnips, carrots and radishes are fleshy as they store food. The plant uses this food when required. We also eat some of these roots, right? As you can see, these are the storage root and we consume them. Number two, supporting roots. Bamboo, maize and sugarcane are tall plants. In these plants, the roots develop from the lower nodes of the stem. They grow downward and help to fix the plant firmly. Such roots are called stilt roots.
In some plants, such as the Indian rubber plant and the banyan tree, roots arise from the horizontal branches of the stem and develop towards the soil. On touching the soil, they fix into it and act as pillars. These pillars, like roots, are called prop roots. They provide support to the heavy branches of the tree. See, आपने banyan tree में देखा होगा कि किस तरह से जो roots आपकी निकलती हैं, right? और आप सॉइल को टच करती हैं, देन वो फिक्स हो जाती है. तो ये प्रॉप रूट्स होती हैं जो प्लांट को या ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. इसी तरह से बैम्बू, मेज एंड शुगर केन की बात करें तो इनमें जो रूट्स होती हैं उनके लोअर नोड होते हैं जो स्टेम से वहां से डेवलप होती है. ये डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, प्लांट को फॉर्मली फिक्स करते हैं. तो ऐसी रूट्स को कहा जाता है दिस वन स्टिल्ट रूट्स. राइट. एक्टिविटी 1, टू स्टडी द रूट नोड्यूल्स इन अ लेग्यूमिनियस plant. Take out any leguminous plant from your garden, wash its roots thoroughly. What do you see on the roots? You will see small swellings on the roots which are called root nodules. देखिए कोई भी leguminous plant लेंगे आप, leguminous plant मोस्टली आपकी दालें होती हैं, राइट, दाल वाले प्लांट होते हैं. तो जब आप उसकी रूट्स को वॉश करेंगे thoroughly तो आपको उसमें छोटे छोटे स्वेलिंग्स नजर आएंगी जो एक्चुअल में आपकी होती हैं रूट नोड्यूल्स. राइट. नंबर 3, nodulated roots. Leguminous plants such as peas, beans, groundnuts, gram, urad and moong are a few examples of plants that possess nodulated roots. Certain bacteria called rhizobium live in their root nodules. These bacteria fix atmospheric nitrogen in the soil. The plant also absorbs this fixed nitrogen from the soil along with water. Leguminous plants में आपके जो होते हैं like जैसे मैंने आपको बोला दाल वाले प्लांट होते हैं like beans, peas, groundnuts, इनमें आपके नोडुलेटेड रूट्स होती हैं. राइट. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, वो इन रूट नोड्यूल्स में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ओके. और जिसके बाद प्लांट्स इसे यूज करते हैं. राइट. एक्टिविटी 2, टू शो एनकरेज बाय रूट्स. गो आउट इन द गार्डन एंड लुक फॉर सम लिटिल प्लांट्स. Try to dug out one plant without damaging it. What do you observe? You will notice that plant is firmly held by the soil, which doesn't allow the plant to be pulled out. आप कभी भी किसी गार्डन में जाइए और किसी प्लांट को आप डिग आउट करने की कोशिश कीजिए, बट उसे डैमेज नहीं करना है. तो आप नोटिस करेंगे कि प्लांट्स जो है सॉइल में फॉर्मली हेल्ड होते हैं बाय रूट्स. ओके. फंक्शंस ऑफ अ रूट. प्राइमरी फंक्शंस. नंबर 1, fixation. It fixes the plant firmly to the soil. Number 2, absorption. The root hairs helps in the absorption of minerals and water from the soil. Number 3, transportation. Mineral and water absorbed by the roots are transported up to the stem into the branches. अब जो मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करना भी तो जरूरी है, तो ये आपके रूट्स के थ्रू ही होता है. एंड नंबर 4, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, thus they prevent soil erosion. Okay. Activity 3, to show that roots help in absorption. Take a pot and fill it with soil. Bring few plants from the nursery. With the scissors, cut the roots of 2 plants so that only tender stem with some leaves remains. Now set these plants in the prepared pot, some with roots, 2 with cut roots. Water the pot. Make your observation about the health of the plants. You will notice the 2 plants with cut roots do not survive, whereas other plants with intact roots were healthy. This experiment proves that roots are essential for absorption of mineral salts and water from the soil. देखिए आप कुछ प्लांट्स लेके आइए नर्सरी से. ओके. और उनमें से एक रूट कट कर दीजिए. ओके. और एक को ऐसे ही रहने दीजिए आप. उसके बाद जब आप फिर से उनको सॉइल में लगाएंगे तो आप देखेंगे जिसकी रूट कट हो चुकी है, जो आपने कट करके रख दिया था, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जबकि जिसकी रूट्स उसके साथ है, इंटैक्ट है, वो प्लांट अपने रूट्स में वो हेल्दी रहेगा. राइट. नाउ सेकेंडरी फंक्शंस. ये तो हमने प्राइमरी फंक्शंस की बात की थी. अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है? नंबर 1, स्टोरेज. In plants like turnip, carrot, radish and sweet potato, the roots are modified for the storage of food. Number 2, mechanical support. In plants like maize, pandanus and banyan, the roots support heavy horizontal branches like a pillar. जैसे हमने banyan में बात की थी ना, prop roots की जो आपके plant को support करती हैं. Okay. The shoot system. The part of a plant which grows above the ground is called the shoot system. It develops from the young shoot or plumule. जैसे root आपका radicals से grow करता है, shoot आपका जो develop है वो करता है plumule से. The part of the shoot system which bears leaves, flowers, buds and fruit is called the stem of the plant. The stem. A stem is green and soft when it is young. It grows from the plumule of embryo, the seed. It forms a main axis that connects the root system with the rest of the plant body. It grows away from the soil and towards sunlight. The stem may be branched or unbranched.
The leaves grow on the stem at definite points called nodes. There may be one or more leaves at a node. The part of the stem that lies between two successive nodes is the internode. The angle between the base of a leaf and the stem is termed as leaf axil. स्टेम देखिए आपने देखा है ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है जब वो यंग होता है, ओके ये आपके प्लूव्यूल से ग्रो करते हैं एम्ब्रियो के, फिर मेन एक्सेस बनाता है जो कि रूट सिस्टम को कनेक्ट करता है बाकी की प्लांट बॉडी के साथ. ओके, द बर्ड्स. A bird is a condensed shoot. Birds may give rise to new shoots or to flowers. Birds which grow into new shoots are called vegetative birds. Birds which grow into flowers are called floral birds. A young shoot has a bud at its tip. This is known as the terminal bud or apical bud. The buds in the axis of leaves are called axillary bulbs or lateral buds. They give rise to lateral branches. Okay. अब bird जो है आपकी, जो आपकी न्यू, जिसमें से आपकी न्यू शूट ग्रो करती है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स. एंड बर्ड जो आपके फ्लावर्स में ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोरल बर्ड्स. ओके, यंग शूट में बर्ड होता है उसके टिप में, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड या फिर एपिकल बर्ड. एंड जो बर्ड्स आपकी लीव्स के एक्सिल में होते हैं कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स या लेटरल बर्ड्स. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. The stem gets modified to perform various functions. Some modifications of the stem are given below. Number 1, for storage of food. Ginger, potato and onion have underground stems. They become thick and fleshy due to storage of food. They appear like roots, but they are stems since they bear nodes, scaly leaves and buds. These stems help in perennation. Figure shown alongside shows some of the stems which store food. See, these are the stems और हमें ऐसा लगता है कि ये roots हैं, but actually में stem है जो हम consume करते हैं. Okay. Number 2, for mechanical support. Some plants have weak stems such as the passion flower, gourd and the grapevine. In these plants, the axillary buds are modified into thin, wiry, coiled, leafless structure known as tendrils. These tendrils help the plant to climb by coiling around any support as shown in the figure given alongside. ओके, अब कुछ स्टेम होती है जो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं. जैसे आपने कुछ प्लांट में देखा होगा, जैसे पैशन फ्लावर या पीप, उसमें क्या होता है आपकी इस तरह से वो कॉइल अप हो जाती हैं, राइट, जिन्हें हम कहते हैं टेंड्रल्स. तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ये लीफलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअल में. नंबर 3, फूड मैन्युफैक्चरिंग. The cactus plant grows in desert where water is very scarce. In this plant, the stem is green, fleshy and thick. The green stem performs all the functions of leaves. It produces food by the process of photosynthesis. The leaves are modified in the form of spines which reduce the loss of water from the plant and also help in protection. वैसे तो देखिए photosynthesis आपके stem leaves करते हैं, but जो desert plant होते हैं आपके like cactus, उनकी stem होती है green and fleshy, तो वहाँ पे photosynthesis का काम करते हैं stem. Okay. Now functions of stem. Number 1, transportation. It helps in the transportation of mineral salts and waters absorbed by the roots of the plant and helps in supply of food from the leaves to various parts of the plant such as roots and stem. का देखिए मेन फंक्शन होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन करना, मिनरल सॉल्ट्स का है जो वाटर एब्जॉर्ब होता है. ओके, इसके अलावा फूड जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं उसको प्लांट के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना. ओके. नंबर 2, सपोर्ट. इट सपोर्ट्स ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स. Number 3, food manufacturing. The green stem can make food for the plant. For example, in cactus, okay, it is the stem which makes food for the plant. Number 4, food storage. The green stem also functions as a storehouse of a food, as in the case of garlic, onion, potato, ginger. Number 5, climbing. In weak plants like the gourd, bitter gourd, the stem get modified to form tendrils which help the climbers in climbing. जैसे हमने पहले बात की, जो वीक प्लांट्स थे उनमें क्या होता है कि जो स्टेम है टेंड्रल्स में मॉडिफाई होती है जो क्लाइंबर्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. एंड नंबर 6, पेरेनेशन. Certain underground stems like ginger, garlic, potato help the plant to tide over unfavorable climatic conditions. This is called perenniation. Activity 4. To show that the stem helps in conducting water upwards, gently dig out a balsam plant or any other plant with white flowers from the garden. Wash its root well, then cut the roots carefully. Dip the lower end of the cut stem in a bottle containing water to which a few drops of red ink has been added as shown in given figure. Leave the plant undisturbed for a few hours. Notice the plant carefully. You will notice that the color of the white flower changes to red. आपको एक बाल्सम प्लांट लेना है या फिर कोई भी ऐसा प्लांट लीजिए जिसका व्हाइट फ्लावर हो. ओके, उसकी रूट्स को अच्छे से वॉश करना है, फिर केयरफुली उसे कट करना है. अब जो कट स्टेम है आपका, उसका लोअर एंड आपने बॉटल में डिप करना है जिसमें वाटर और उसमें आपने रेड इंक की ड्रॉप्स को डाल देना. ओके,
फिर उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए, आप देखेंगे जो व्हाइट फ्लावर का कलर है वो रेड चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट द लीफ. The leaf is a flat, green, lateral outgrowth of the stem. Parts of leaf. A leaf rises on the stem from the node. It usually has a stalk called petiole and a pair of very small leaves at the base of the petiole called the stipules. These stipules protect the young leaf. Okay. See, this is the petiole and यहाँ पे आपका ये है stipule. Okay. Do all plants have petioles? No. Some plants do not have petioles and are called sessile. Wheat, maize, rice and barley are few examples of such plants. The flat, brad, expanded green part of the leaf is called leaf blade or lamina. See, this is the lamina, right? The petiole continues in the leaf up to tip in the form of the midrib. Okay, जो petiole आपका था वो continue रहेगा tip तक. Okay, and this is the midrib, right? Mid. On either side of the midrib, thin veins branch out. These veins in turn divide and subdivide to form a fine network of veinlets which keep the leaf in expanded form. The veins are actually the transporting vessels for water and food. और इसमें आपकी ये side branches होंगी, veins. Okay, right? Types of leaves. Plants have two types of leaves. Number one, simple leaves. Number two, compound leaves. Number one, simple leaves. A leaf which has a single or undivided lamina is called a simple leaf. It has an axillary bud in its axil. Dahlia, jamun and mango are few examples of simple leaves. अच्छा, simple leaves में आपका क्या होता है कि आपके एक single और undivided lamina होता है. Okay, simple leaf, lamina जो है undivided है, right? And number two, compound leaves. A compound leaf has a number of leaflets borne on a single stalk as shown in figure B. See, this is a single petiole and then उसमें बहुत सारी आपकी leaves हैं, right? Leaflets do not bear axillary buds in their individual axils. The stalk of a compound leaf is called the rachis, which has an axillary bud. Neem, gram and rose are few examples of compound leaves. Modification of leaves. Like roots and stems of various plants, leaves also get modified to perform different functions. Number one, leaf tendrils. In some plants, leaves are modified into tendrils. These provide help to weak and stemmed plants to climb a support to expose their leaves to sunlight. In the sweet pea plant, the terminal leaflets are modified into tendrils as shown in figure A given alongside. Okay. अब leaves कई plants में क्या होती है कि modify हो जाती है tendrils में, जिससे कि वो extra support provide करते हैं. For example, ये जो आपका pea plant है. Number two, spines. In desert plants such as cactus, the leaves are modified to spines, यानी कांटे. To reduce loss of water by transpiration, they also protect the plants from grazing animals. अब क्योंकि वहाँ पे water की कमी होती है तो उसको इसीलिए water जो है loss ना हो transpiration में, तो leaves reduce हो जाते हैं spines में. Okay. Number three, pitcher plant. In the pitcher plant or Nepenthes, the leaf is modified into pitcher-like formation with a lid which covers the mouth of the pitcher as shown in figure C. The pitcher act as a trap for insects which are killed and digested for nitrogenous matter. Pitcher plant ये आपका insectivorous plant होता है. देखिए कैसे pitcher की form में, मटके की form में. तो ये form इसलिए होता है ताकि insect उसके अंदर trap हो जाए, okay, और फिर वो उसको digest कर सके. Functions of a leaf. Number one, manufacturing of food. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. The leaf is called the food factory of a plant. Okay. And number two, transpiration. The excess of water absorbed by the root hairs is evaporated through the pores called stomata present in the lower surface of the leaves. कई बार plant जो है excess water absorb कर लेते हैं तो वो फिर आपका lose होता है leaves के through, because leaf में आपके होते हैं stomata. Okay. Activity 5, to demonstrate the process of transpiration. Take a small potted plant and cover it with a polythene bag as shown in the given figure. See it after a few hours, you will notice a few droplets of water in the bag. See, आपको क्या करना है, एक potted plant लेंगे और उसमें इस तरह से अपने polythene bag लगाना, उसको बांध देना. कुछ घंटों के बाद आप उसमें देखेंगे few droplets of water. तो what does it show? It shows that जो transpiration आपका leaf से होता है. Okay. Number 3, storage of food. In certain plants, leaves are modified to store food. For this purpose, leaves become fleshy and thick. Example, onion.
Number 4, gaseous exchange. Exchange of gases occur during respiration and photosynthesis. During respiration, oxygen is taken in, carbon dioxide is given out. During photosynthesis, carbon dioxide enters the leaves and oxygen is given out. Therefore, leaves maintain the balance of gases in nature. अब leaves में आपके देखिए स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे pores, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू तो gaseous exchange होता है, right? Number 5, vegetative propagation. In certain plants, leaves bear buds in the marginal notches from which new plants grow and develop. Example, begonia and baraphylum. कुछ प्लांट्स होते हैं आपके, सर्टेन प्लांट्स जो लीव्स हैं बर्ड्स बेयर करती है, जो मार्जिनल नोचेस होते हैं ना, जिसमें से फिर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं. ओके, द फ्लावर. Flowers are the most attractive part of a flowering plant. A flower is a modified shoot in which nodes and internodes are highly condensed. It is the reproductive structure in a flowering plant. Parts of a flower. Flowers vary in shape, size and color, but all flowers have the similar basic parts as shown below in the figure. A flower consists of the following parts or whorls. Number 1, pedicel. The flower is borne on a stalk called pedicel. The uppermost end of the pedicel is somewhat swollen. It is known as the thalamus. It bears all the 4 whorls of a flower. See, जो आपका uppermost end होता है pedicel का, वो थोड़ा सा आपका swollen होता है, जिसे हम कहते हैं thalamus. ओके, और इसमें से आपके जो 4 whorls होते हैं फ्लावर के, वो बेयर करते हैं. Number 2, calyx. The first outermost whorl of a flower is called calyx. It consists of leaf-like structure called sepals. Sepals are generally green in color and prepare food and supply it to other floral parts. They also protect the new delicate inner parts of the flower during the budding stage. अब जो पहला outermost whorl है फ्लावर का, होता है कैलिक्स, और इसमें आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं सेपल. और सेपल्स आपके होते हैं जनरली ग्रीन कलर में एंड फूड्स प्रिपेयर करते हैं और बाकी फ्लोरल पार्ट्स को ये सप्लाई करते हैं. नंबर 3, कोरोला. The second whorl of a flower consists of petals or corolla. Each segment of the corolla is known as petal. Petals are generally brightly colored due to the presence of pigments. The bright color, nectar and sweet smell attract the insect, which in turn help in pollination. अब पेटल्स आपके ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उनमें स्वीट स्मेल भी होती है, इसकी वजह से नेक्टर भी होता है, इसी वजह से जो इंसेक्ट है अट्रैक्ट होते हैं एंड देन पॉलिनेशन आपका होता है. नंबर 4, एंड्रोइजियम. द थर्ड floral whorl called androecium is a male reproductive organ of the flower. It consists of stamens. इसमें आपके stamens होते हैं. Each stamen consists of a thin stalk or filament and a 2-lobed head called the anther. See, this is the anther. This is 2-lobed head. Okay, the anther and the filament are connected by a connective tissue. Each anther lobe has 2 pollen sacs which are filled with particles called pollen grains. The pollen grains are minute in size and take part in reproduction. Number 5, gynoecium or pistils. The gynoecium is the 4th whorl which is composed of 1 or more female reproductive organs called pistil. Okay, ये जो आपका 4th whorl है, इसमें आपके female reproductive organs होते हैं, जिसे कहते हैं pistil या फिर carpel. Okay, each carpel consists of an ovary, style and stigma. Okay, the stigma is the terminal part of the pistil. It is hairy, rough and sticky. It is used for receiving pollen grains during pollination. Okay, तो स्टिग्मा क्या होता है आपका, ये आपका pollen grains को receive करता है pollination के time पे. The style is a thread-like structure which joins the stigma with the ovary. It is meant for raising the level of the stigma. The ovary is the basal swollen part of the pistil. Okay, ovary आपका swollen part होता है pistil का. The ovary bears the ovules on a raised tissue called the placenta. Each ovule contains a female reproductive cell or ovum. The ovary of the flower becomes the fruit and the ovule in it becomes seeds after fertilization. Okay, flower का जो ovary है वो बनता है fruit and जो ovule है वो आपका बनता है seed fertilization के बाद. Okay, activity 6. To cut sections of an ovary to observe ovules. Pluck a healthy sunflower from a plant and observe the center of the flower to find the pistil. Cut across the thickest part of the pistil with a blade and see what lies inside it. You will find tiny white structure called the ovules in the ovary. These contain the female cells or egg cells. आप एक healthy sunflower लेंगे plant से, उसका center आप observe करेंगे
पिस्टल को फाइंड करेंगे, फिर आपने जो थिकेस्ट पार्ट है पिस्टल का उसके क्रॉस आपने इसको कट करना है ब्लेड से, और फिर आप उसके अंदर देखेंगे छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स होंगे जो इसे कहते हैं ओव्यूल्स. ओके, ओव्यूल्स इन द ओवरी, एंड इसमें आपके फीमेल सेल्स या एग सेल्स होते हैं. राइट. टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. Number 1, incomplete. If the flower is lacking one word out of the 4, the flower is said to be incomplete flower. Example, cucurbits. 4 में से अगर एक भी word आपका lacking है तो वो incomplete. Number 2, complete. Generally in all flowers, all the 4 words, that is calyx, corolla, androecium and gynosium are present. Such a flower is said to be a complete flower. Example, cotton. Number 3, unisexual. If the flower is lacking gynosium and androecium, necessary words on the same plant, the flower is said to be unisexual flower. Okay, अगर flower में gynosium and androecium नहीं है same plant पे तो वो unisexual flower है. For bisexual or hermaphrodites, in most flowers the androecium and gynosium are present on the same flower. Such a flower is called bisexual. Example, cotton. और जिसमें ये दोनों ही पाए जाते हैं वो आपके bisexual flower होते हैं. Okay. Number 5, zygomorphic. Flowers which can be bisected into similar halves in only one plane are termed as zygomorphic flowers. Example, Pisum sativum. Okay, वो flower जिनको bisect किया जाता है similar halves में. Okay. Number 3, actinomorphic. Flowers which can be bisected into similar halves along 2 or more planes are termed as actinomorphic flowers. Example, Dhatura. वो फ्लावर जिनको हम सिमिलर हाउस में बाइसेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग 2 या उससे ज्यादा प्लेन्स में. राइट. एग्जाम्पल आपका धतूरा. नाउ फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. Number 1, most important function, reproduction. Flower is the organ of reproduction in plants and it develops into the fruit and seed. You have learned that some flowers possess male and female reproductive organs. The male sex cells are contained in the pollen grains found in the anther and the female sex cells are contained in the ovules found in the ovaries. Pollen grains are transferred from the anther to the stigma by a process called pollination. After pollination, a male cell and a female cell fuse together in ovule in a process called fertilization. Fertilized ovules grow into seeds. Under favorable conditions, seeds germinate and give rise to seedlings which develop into new plants. This process is called sexual reproduction. देखिए जब आपके pollen grains आपके ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में तो उसे कहते हैं pollination. Pollination के बाद मेल सेल फीमेल सेल फ्यूज होते हैं ओव्यूल में and this is known as fertilization. फिर आपका जो fertilized ovule है वो आपका सीड में ग्रो करता है. Okay. Number 2, perfumes. Flowers provide perfumes or scents. The common ones are lavender, jasmine, kevra and rose. Number 3, aesthetic. Cut flowers are used for interior decoration. Flowering plants are grown in houses, gardens, parks and roadsides for their brilliant colors, beautiful shapes and sweet smell. Number 4, spices. Cloves, long जिसे कहते हैं, which are used as a spice and in medicine are the dried flower buds of the clove plant. Actual में ये dried flower bud होता है. Okay. Activity 7, to show the role of flowers in identification of plants. Procedure, collect 2 twigs each of 3 different plants. In each case, one twig should have both leaves and flowers, while the other twig should have only leaves and no flowers. Ask your partner to recognize the plants with the help of the twigs without flowers. Note your observations. Now show the twigs with flowers and ask your partner to name the plants. You will notice it was easy to recognize the plant with the help of the twigs with flowers on them. देखिए आप 2 twigs लेंगे 3 different plants के. Okay. और इसके बाद आपको क्या करना है, एक ट्विग ऐसा लेना है जिसमें लीव्स एंड फ्लावर्स हो और दूसरा ऐसा लेना है जिसमें लीव्स तो हो बट फ्लावर्स हो. फिर अपने फ्रेंड को आप बोलेंगे या पार्टनर को बोलेंगे कि उसको रिकग्नाइज करें. एक जो आपके साथ फ्लावर वाला है, एक जो विदाउट फ्लावर है. तो आप देखेंगे कि जिसमें फ्लावर होता है लीव्स के साथ, उस प्लांट को रिकग्नाइज करना काफ़ी आसान होता है. ओके. स्टडी ऑफ सम कॉमन फ्लावर्स. चलिए अब कुछ कॉमन फ्लावर्स के बारे में जानते हैं. नंबर 1, स्वीट पी. This flower is complete in having all the 4 whorls. It can be bisected into 2 halves, 2 similar halves. Petals are 5 and are free from each other. Sepals are 5 in number and green in color. Androecium is with 10 stamens arranged in 2 bundles, 9 fused and 1 free. Gynosium has single carpel with single locule. अच्छा देखिए ये फ्लावर आपका कंप्लीट है. दैट मीन्स इसमें आपके 4 वर्ल्स हैं. इसको बाइसेक्ट किया जा सकता है 2 सिमिलर हाफ्स में. पेटल्स इसमें 5 होते हैं एंड दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. सेपल्स भी 5 होते हैं इन नंबर एंड ग्रीन इन कलर. ओके.
Number 2, China rose or Gudhal. This flower is a red color and occurs singly. Okay, this is China rose. Each flower is large with a long particle as shown alongside. It is a complete flower because it contains all the 4 whorls. Calyx consists of 5 fused sepals which are green in color, while corolla consists of 5 petals. Stamens are many and all filaments are fused to form a single tube, but their anthers are free. Gynosium consists of 5 carpels with 5 styles which are united at the base but free at the tips with 5 stigmas. Number 3, Petunia. Petunia में देखिए calyx 5 sepals हैं, corolla 5 petals, androsium 5 and gynosium 2. Activity 8. To count the number of parts of sunflower, pluck a sunflower from a plant and see its periphery. There are some leaves like flowers called ray florets at the margin. At the center are tubular flowers called disc florets. Now count the number of sepals and petals. You will find 5 sepals and 5 petals. आपको sunflower में number of parts को count करना है. एक sunflower को आप pluck करेंगे और उसमें कुछ आपका लीफ लाइक फ्लावर्स होंगे जिन्हें रे फ्लोरेट्स कहते हैं मार्जिन पे. सेंटर पे ट्यूबुलर फ्लावर्स होगा जैसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट. फिर काउंट जब आप करेंगे सेपल्स एंड पेटल्स को आप देखेंगे दोनों ही 5 इन नंबर्स होंगे, मींस पेटल्स भी एंड सेपल्स भी, राइट. द फ्रूट. After pollination and fertilization, the ovary develops into a fruit. Thus, a fruit may be defined as a mature, a ripened ovary. A fruit consists of 2 parts, the pericarp and the seed. The pericarp develops from the walls of the ovary while seeds develop from ovules. The pericarp may or may not be differentiated into the 3 layers. The outer layer or skin of the fruit called the epicarp, the middle layer called the mesocarp and the inner layer called the endocarp. देखिए पहले आपका पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी जो आपका फ्रूट में डेवलप हो जाएगा. इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प एंड द सीड. जो पेरिकार्प है ये आपका डेवलप होता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओवरी, जबकि सीड आपके डेवलप होते हैं जैसे आपने पहले पढ़ा था ओव्यूल से, राइट. फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट. Number 1, dispersal of seeds. It helps in the dispersal of seeds, right? Number 2, protection. It also protects the seed against injury and other unfavorable climatic conditions. Number 3, storage of food. Stores food as in case of tomato, apple and mango. So these are the functions of a fruit, right? I hope students ये chapter आपको समझ आया होगा and chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.